आज हम लोग जा रहे हैं आदि योगी के इनॉग्रेशन में, जो कि बेंगलोर के चिकबल्लापुर में हो रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। अनवीलिंग ऑफ आदि। बच्चे 4 मिनट हो गए और अंदर लगभग 5 किलोमीटर आने में हम लोग को 1 घंटा लग गया। बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे आज। हम लोग पहुँच गए चिकबल्लापुर उद्घाटन के लिए। आज आदि योगी स्टैचू की अनवेलिंग है और पार्किंग पूरी फुल है। ऐसी बहुत सारी पार्किंग्स हैं यहाँ पे। भार्गवी भी आई हैं आदि योगी के स्टैचू के अनवीलिंग में। बहुत बढ़िया। तो हम लोग पहुँच गए हैं। क्या हुआ भार्गवी? तो हम लोग इवेंट एरिया के अंदर जा रहे हैं, जो कि आदि योगी के पीछे से है। भार्गवी कुछ बोल रही है। हर हर महादेव। विशालाई सेंटर। हम लोग जा रहे हैं इनसाइड सिटिंग के लिए और अभी से ही काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। तो सिटिंग एरिया यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ये टिकट चेक हो रहा है। सद्गुरु सन्निधि हम लोगों ने पेड बुक किया है तो वी आर गोइंग इन द। ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 112 The shrine will remain open. The shrine will open again after the evening event and will be open throughout the night. Will you make it happen? It's come a long way, that bloke there on the left side. I see in nearly over 800 years. A proper दृष्टो मया तव महाकारः।
About 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.
magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi, reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, what about us? Adiyogi said, just drink of me, which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. आदि योगी का इनॉग्रेशन देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस। बहुत ठंडी हो गई है यहाँ पे, भयंकर ठंड है। सुबह भी हम लोग जा रहे थे तो यहाँ से वीडियो लिया था मैं, वापसी में भी यहाँ का ले रहा हूँ। प्रोग्राम अटेंड कर लिया, दर्शन भी कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं वापस।